Hello student, lead storage cell. This is a secondary cell. In the previous lecture, we already discussed primary cell, and that is dry cell, which is not rechargeable. And this cell you can recharge once it becomes dead. Okay? तो सबसे पहले लेट स्टोरेज सेल हमारे घर में व्हीकल जो है, कार है, बाइक है, जो भी व्हीकल है उसके अंदर होता है। इन्वर्टर है, उसमें भी बैटरी होती है। तो ये जो मेन है वो लेट स्टोरेज सेल है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। तो प्रिंसिपल जो है एज इट इज, देयर इज नो चेंज। प्रिंसिपल जो है दैट इज कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज सेम। ओके, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सबने पूरा देखा हुआ है कि वो बैटरी की साइज वो लाइक बॉक्स होता है। अब उसको हम थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। तो एक वेसल के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज अ वेसल, ओके, इन विच सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैविंग concentration 38% by mass। सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, concentration है 38% almost। Then you have to insert two type of lead, one made up of Pb, another that is also made up of Pb with coating of PbO2। So this plate that is Pb solid lead, and this one is coating है इसमें PbO2 का। Clear? नॉर्मली जो बैटरी होती है कार में, उसको आप देखना नंबर ऑफ प्लेट्स अरेंज्ड इन सीरीज, एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड लाइक दिस। ओके, लेकिन यहाँ वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। सो फॉर दैट वी सेलेक्ट ओनली वन पेयर ऑफ एनोड एंड कैथोड। So this is Pb and this is PbO2. No requirement of saltridge because both electrode dip in the same solution, so there is no requirement of saltridge or any other requirement. So internal circuit already completed. Now external. For external circuit you have to connect Pb with PbO2. So what happen? Sp redox start, spontaneous redox start. This process, again I repeat, this process is discharging. This process is discharging. Clear? So where oxidation occur and where reduction occur. So in that case discharging Pb act as a anode, yes, and PbO2 act as a cathode. So here oxidation occur, this is A and this is C. Anode that is negative, cathode that is positive. So electron will come out from this side. So reaction like this, Pb combined with SO4 minus 2. So we have PbSO4 solid plus 2 mole electron. PbSO4 that is a sparingly soluble salt. So its solubility is very less. So PbSO4 deposited on the anode. Clear? Now see the change in oxidation number. So Pb having 0 and here plus 2. So this reaction is known as oxidation. Clear? Sulfuric acid means in solution we have 2H plus and SO4 minus 2. Initial density, for example 1.25 to 1.30 gram per ml, initial density of solution. So this is oxidation. Now what about reduction? So at cathode reduction occur. In that case electron entered here and this PbO2 with 4H plus and SO4 minus 2 gain 2 mole electron and convert into again PbSO4 solid plus 2H2O. So again lead sulfate produced, which is also deposited on this plate. So finally during discharging what happened? On both plate PbSO4 deposited, okay, during discharging process. Now see the change in oxidation state of Pb, here plus 2 and here plus 4, 2 sorry. So this is a reduction.
Clear? Now if you combine these two, then we have redox. So electron will cancel. So finally Pb plus PbO2 plus 4H plus 2SO4 minus 2 gives 2PbSO4 plus 2H2O. Clear? So by this way, sp redox occur in late storage cell. Now there are some questions related with discharging process. So the first one is, which one act as a anode and which one act as a cathode? So this is already I mentioned here. Anode negative and cathode positive. Number one. Second, sp redox occurs. This is very important. sp redox occurs. Now see which one consumed and which one produced. So here from the reaction we can say PbSO4 increases, clear, and H2SO4, amount of H2SO4 that will decrease, amount of H2O that will increase. So finally density of solution decreases. Now see why density of solution decreases? Because in solution amount of solute is decreased and amount of solvent is increased. Therefore we can say density of solution decreases. Now see the initial density almost 1.25 to 1.30. Now at the end of this process, ultimately density becomes 1.05 gram per ml. It means cell becomes dead. Clear? Or you can say discharged. तो cell यहाँ पर discharge हो गया. So this is a discharging process of late storage cell. Clear? And what about the cell potential? So we have 2 volt per pair. Yes, 2 volt per pair. It means per pair means 1 pair. So if we have 1 pair of anode and cathode, then we have 2 volt. So how many plates you have to arrange in late storage cell? That is your requirement. For example, in car 20 volt required, then you have to arrange total 10 plates. Okay, 10 pair. If 50 volt required, then 25 pair. So you must have information about cell potential obtained with the help of 1 pair. Clear? So this is one of the important theory in this section, discharging of late storage cell. Now see, this is a secondary cell. So once this cell become discharged, then you can recharge. How? ये भी एक important task है. Sir, how we can recharge this cell? So this is one procedure. First of all, assume this cell is dead. Clear? It means तो डिस्चार्जिंग कंप्लीट हो गया. ये स्क्रीनशॉट पहले निकाल दो. इसका पूरा प्रोसेस आपका डिस्चार्जिंग का हो गया है. अब मैं इसको चार्जिंग में ले रहा हूं. क्लियर? Now what happened in charging? So first of all you should know what is the procedure for charging. Charging हो जाओ ऐसे थोड़ी होगा. So for that चलो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से निकलेंगे. क्लियर? क्योंकि ये सेल अब क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है. PbSO4 totally deposited on both electrode. Clear? Sulfuric acid decrease, water increase, like this. Now how this cell charged? For that we have to connect this cell with live cell or live battery. Okay, so here second point, यहाँ जो बैटरी होगी उसके 2 एंड होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव. तो कनेक्शन कैसे होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. अब एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, चार्जिंग में हम क्या करेंगे, बाहर से इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे. अब इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो डिस्चार्जिंग में जो डायरेक्शन थी उससे अपोजिट होनी चाहिए. क्लियर? तो जब ये सेल डिस्चार्जिंग प्रोसेस में था, जब ये खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो कहां से दे रहा था, फ्रॉम एनोड, लाइक दिस. नाउ इन चार्जिंग बाहर से इलेक्ट्रॉन यहां पे आना चाहिए. क्लियर? सेकंड पॉइंट, बैटरी में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलते हैं कि पॉजिटिव से निकलते हैं? सिंपली नेगेटिव से निकलते हैं. जब डिस्चार्जिंग था तो नेगेटिव था, देखो, तो यहां से इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाले थे.
तो अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहे हैं तो ये जो बैटरी है दैट इज एक्सटर्नल सप्लाई, तो उसका नेगेटिव एंड यहाँ पे होगा और यहाँ पे पॉजिटिव. क्लियर? सो लाइक दिस. सो बाय दिस वे यू कैन चार्ज. नाउ सी during charging what happened. So here electron entered, so on this electrode reduction will occur. It means this plate act as a cathode. So this plate made up of Pb. It means in charging Pb becomes cathode and PbO2 becomes anode. Clear? तो ये जो प्लेट है now it becomes C and now it becomes A, and this process in charging our lead storage cell behave like electrolytic cell and non-sp redox occurs. Clear? So this is very important part of this chapter. And in the initial level I already discussed, if you supply external more than 1.1 volt in case of 10 years, then what happen? Reverse direction, reverse current. Clear? So this is electrolytic cell. So same way here in charging non-sp redox occur and the lead storage cell behavior of lead storage cell like electrolytic cell. Now another change is like PbSO4. Now what happened about PbSO4? So gradually PbSO4 decreases, sulfuric acid H2SO4 increases, water decreases, density increases. Clear? And what about reaction? So in that case this anode convert into cathode and this convert into anode. Not only anode and cathode but side also change. तो एनोड पे आप कौन सा रिएक्शन लिखोगे चार्जिंग में? तो ये रिएक्शन एनोड पे होगा लेकिन उल्टा लिखना है लाइक दिस. PbSO4 plus 2H2O gives PbO2 plus 4H plus SO4 minus 2 plus 2 electron. Clear? Now what about at cathode? So at cathode PbSO4 plus 2 electron gives Pb plus SO4 minus 2. So this is a redox but non-sp. This is also redox but sp. So this is a basic difference between discharging and charging. ये clear होना चाहिए. Okay? Second important part in physics. Physics में आप जो theory पढ़ने वाले हो that is the charging of lead storage cell directly. Yes. In chemistry we have to study first of all discharging then charging. तो केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें Pb एनोड होगा, PbO2 कैथोड है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे मेंशन किया है टेक्स्ट बुक में बिकॉज़ केमिस्ट्री रिलेटेड विद डिस्चार्जिंग प्रोसेस व्हाइल इन फिजिक्स डायरेक्ट चार्जिंग प्रोसेस. सो इन फिजिक्स मेंशन लाइक दिस. अब स्टूडेंट जो है उनको तो बस डिस्चार्जिंग चार्जिंग सब सेम ही लगता है. केमिस्ट्री वाले ये लिखाते हैं, फिजिक्स वाले ये लिखाते हैं. पापा मुझे पढ़ना ही नहीं है. ठीक है? So both are correct, but condition is totally different. So keep it in mind. Whenever you give answer, then first read question properly. Whether question related with discharging process or charging process. Clear? Okay. Second thing is in physics, the positive and negative end like this. Negative यहाँ पे होगा, positive इधर होगा. तो उससे क्या होगा? ए प्लेट इधर होगी, ए प्लेट इधर होगी. तो ये भी माइंड में सेट करके रखना. ओके? तो ये दो तीन पॉइंट्स जो है तो फिजिक्स में आने वाले हैं तो वहां पे आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया. क्लियर? तो यहाँ पे बैटरी है, इसका मीनिंग हुआ दिस डायग्राम रिलेटेड विद चार्जिंग प्रोसेस. यहाँ पे बैटरी सपोज नहीं है, बैटरी नहीं, इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस सेल इज लाइव. यस. और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है. क्लियर होना चाहिए. ये पूरा जो चैप्टर है ना इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोथ रिलेटेड विद रेडॉक्स बट वन sp अनदर नॉन sp. ओके? तो इसका परफेक्ट होना चाहिए, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. इट मींस मिक्सिंग नहीं होना चाहिए. दोनों का पर्पस भी डिफरेंट है. केमिकल का पर्पस है टू गेट इलेक्ट्रिसिटी
और इसका पर्पस उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हो जाएगा. ओके, सो this is one of the important theory in this section. Again I repeat, this is a late storage cell. Now second cell, which is not most important because it is a very costly cell. So normally हम routine life में कंपनी वाले बनाते नहीं है, that is निकल कैडमियम सेल. निकल कैडमियम सेल ये भी स्टोरेज सेल ही है, लेकिन बहुत पैसे ज्यादा लगते हैं. क्लियर? तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते. फिर भी आपको एनोड कैथोड पता होना चाहिए. तो यहाँ पे CD convert into CDO. It means 0 plus 2. So cadmium act as a anode. Another change is NiOH thrice convert into NiOH twice. So plus 3 convert into plus 2. So nickel act as a cathode. Clear? And cadmium act as a anode. इतना थोड़ा पता होना चाहिए. ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना. सो दिस इज अ लेक्चर अबाउट सेकेंडरी सेल. तो दोनों सेल आपके कंप्लीट हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम एक स्पेशल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल. ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच.